हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जूलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे। एपीकल्चर टॉपिक है बी कीपिंग इन इंडिया। जो हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं मधुमक्खी से, उसके बारे में है। उसी को एपीकल्चर बोलते हैं। उस पर को बी कीपिंग इन इंडिया बाय सरदार सिंह पीएचडी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। Preface: Beekeeping has been practiced in India from the time immemorial. The earliest mention of it is found in the Vedas and the Ramayana. Since then, the history of beekeeping can be followed with but little change in the management method and little improvement in the techniques of keeping them. For the past 2000 years, if not more, bees have been known to be kept in log and pot hives and in recesses of the walls for the production of honey. These methods are still in vogue in some parts of the country, and no marked improvement has been effected in them. How wasteful and crude some of these methods were is illustrated by the process of extracting honey by squeezing combs. This entailed the destruction of the bees which collected the nectar and the combs that contained honey. If this destruction were not wrought, the same colonies could have been made to yield honey year after year. Scientific beekeeping is new in India. After the improvement in the methods of beekeeping resulting from new knowledge of the biology and behavior of the honeybee, and the discovery of the principles of movable frames, frame hives, honey extractor, and the smoker in the West in the second half of the 19th century, efforts were made to introduce these improvements in this country also. Such attempts have a long and checkered history, beginning with the introduction of movable frame hive in Bengal in 1882 and in the Punjab in 1883-84. But one of the causes of the failure of such attempts to popularize scientific methods of beekeeping on large scale or to bring out an appreciable improvement in the old methods is the paucity of suitable literature conceived and written in the text of our known and felt inadequacy. As in other branches, what we lack in the field of beekeeping is technical competence and practical knowledge. मतलब ये इस चीज का कमी है, प्रैक्टिकल नॉलेज का और टेक्निकल competence का. Success in beekeeping is largely a question of proper understanding of the biology and the behavior of the honeybees and their proper management, including knowledge of their diseases and enemies and latest equipment for handling them. An attempt has been made to put into this volume authentic and up-to-date information on all aspects of beekeeping in a concise and popular style. It is intended to serve as a handy reference and guidebook for students of agriculture extension workers and all those who are interested in beekeeping either as a hobby or as a profession. In writing this book, help has been received from a number of persons. My thanks are due to Dr. E.S. Narayana, head of the Division of Entomology, Indian Agriculture Research Institute, for giving me valuable suggestions in writing this book. I am also thankful to Dr. D. Chatterjee, Superintendent Botanical Gardens, Calcutta, for checking the botanical terms used in the book. The book has been edited by Sri Prem Nath, former Chief Editor and Production Specialist, Indian Council of Agricultural Research, with the assistance of Sri M.L. Madan, sub-editor. Its production aspects have been looked after by Sri Krishan Kumar, assistant editor, in collaboration with Sarvasri Inderjit Lal, J.B. Bali, and Kailash Nath. The cover design and the other artwork of the book has been prepared by Sri N.S. Bis with the assistance of Sri O.P. Gulati. I am thankful to all these officers of the council for the assistance given by them in the प्रोडक्शन ऑफ दिस बुक. सरदार सिंह ये लिखे हैं और बताएं कि ये लोग हेल्प किए हैं, ये सब नाम है और ये सब डिटेल में बताया हुआ. बी कीपिंग के बारे में ये गाइड एक तरह से बुक है, स्टूडेंट्स के लिए है, जूलॉजी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के लिए भी है, जो वर्कर है उनके लिए है, नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए और थ्योरी नॉलेज के लिए. ये जो बी कल्चर एपीकल्चर है बी कीपिंग का, वो वेदास रामायण का टाइम से हो रहा है. ये बताया हुआ उसमें ये 2000 ईयर से ज़्यादा हो चुका है. फॉर द पास्ट ये लॉग एंड पॉट हाइव्स में
स्टोर किया जाता है और प्रोडक्शन करने के लिए हनी को, और इसको हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हनी का छत्ता होता है उसको यूज करके एक्सट्रैक्ट किया जाता था हनी को। फिर साइंटिफिक मेथड से हनी बी के बारे में सच अटेम्प्ट इंडिया इंडिया में ये हनी को इम्प्रूव करने के लिए कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे हनी एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और हनी को डिजीजेस है जो, और उसको जो एनिमी से हनी बीज का डिजीजेस को अवॉइड करने के लिए इसमें सब बताया हुआ, लेटेस्ट इक्विपमेंट है कैसे इम्प्रूव किया जा सके, सब डिटेल्स में बताया हुआ है। कंटेंट्स, importance of beekeeping, history of honeybee and beeswax in India. In ancient times, qualities of honeybees in war, method of beekeeping in India, ideal hobby, record honey yields, economics of small-scale beekeeping. The honeybee, position of honeybee in animal kingdom, उसका classification है, external anatomy है, internal anatomy, circulatory system, nervous system, reproductive organs, sense organs, bee colony, the queen, the worker, the drone, honeybee development. ये बायोलॉजी ऑफ हनी बी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंस चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 है ये वाला। डेवलपमेंट दिया हुआ, पॉइंट ऑफ कास्ट, डिस्ट्रिक्शन, एग, एडल्ट कॉलोनी, नेस्ट, ये रूटीन, ये लाइफ साइकिल दिया हुआ। स्पीसीज दिया हुआ 3 स्पीसीज, रॉक बीस कॉलोनी, क्वालिटीज ऑफ रॉक बीस, बायोलॉजी ऑफ रॉक बीस, लिटिल बीस कॉलोनी, पॉपुलर बिलीफ्स एसोसिएटेड विद लिटिल बीस, इंडियन हनी बी, बिहेवियर ऑफ इंडियन हनी बी, यूरोपियन बी, इटालियन बीस, डैमर बीस, बीस टू की कौन सा रखना चाहिए एपीकल्चर के लिए, और इंडियन हनी बी को एपिस इंडिका बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। इंडिजिनस मेथड, उसका पूरा डिटेल में नाम याद नहीं आ रहा, एपिस इंडिका था कुछ। इंडिजिनस मेथड, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूव है, क्या प्रेजेंट पोजीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बीस फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्लासिफिकेशन, सिंगल कॉम बीस है, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्साटा, हनी फ्रॉम रॉक बी कॉलोनी, एपिस इंडिका है इंडियन बी। wall or fixed type hives, movable type hives, need for better methods, better beekeeping equipments, principle of bee space, various type of frames हैं, लैंगस्ट्रोथ और 10 लैंगस्ट्रोथ 10 फ्रेम हाइव है, न्यूटन हाइव है, टाइप्स ऑफ हाइव है, आर्टिफिशियल हाइव्स है ये, वॉल हाइव्स, डबल वॉल्ड हाइव्स हैं, कॉम्ब फाउंडेशन, क्वीन एक्सक्लूडर, हनी एक्सट्रैक्टिंग इक्विपमेंट, अनकैपिंग नाइफ, इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग बीज, फीडर्स, क्वीन केजेस, क्वीन सेल प्रोटेक्टर, डमी और डिवीजन बोर्ड, बी एस्केप, हाउ टू एक्वायर बीज, कैसे बीज पकड़े, चैप्टर 6 में सीखेंगे, कैचिंग अ स्वम, हाइविंग अ स्वम, ट्रांसफरिंग अ कॉलोनी, कॉलोनी इंस्पेक्शन, लोकेशन ऑफ एपियरी अरेंजमेंट इन एपियरी, कॉलोनी रिकॉर्ड्स आउट एपियरीज, bee pest relationship between honeybees and plants, nectar pollen potentialities of a locality, pollen yielding plants, nectar yielding plants, classification of plants, fruits, temperate zone fruit trees, vegetable crops, bushes and shrubs, forest and avenue tree herbs, seasonal management, chapter 8 है, ये chapter 7 bee pest के साथ, chapter 8 seasonal management, underlying principles, spring management, swamp prevention, handling swamp management during honey flow, honey extraction, summer routine, causes of absconding, monsoon problems, autumn needs, preparing for winter, packing a hive, winter waste, miscellaneous manipulations, having more bees, कैसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ, यूनाइटिंग, न्यूज़पेपर प्लान, स्मोक मेथड, धुआं से भगाया जाता है मधुमक्खी को, फिर उसका छत्ता से शहद निकाला जाता है, इसको स्मोक मेथड्स बोलते हैं। फीडिंग मेथड्स, उसको अट्रैक्ट करके कुछ केमिकल से फीडिंग मेथड्स है। मूविंग बीस है, एंटी रॉबिंग मेथड्स है, लेइंग वर्कर्स, ड्रोन लेयर्स, सुपर शेड्यूल, क्वीन rearing, rearing, requiring clipping a queen package bees, एनिमीज एंड डिजीज, इसका एनिमीज है डिजीजेस है बी का, वो उसके बारे में कौन कौन सा है जो एनिमीज है बीस, susceptibilities to of honey to diseases, वैक्स मोथ, ग्रेटर वैक्स मोथ, कैटरपिलर है, प्यूपा है, एनिमी है, लाइफ हिस्ट्री, ये नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, लेसर वैक्स मोथ, वैक्स बीटल, वेस्प, ब्लैक एंड्स,
बर्ड्स, ये सब है एनिमी है। और ये मधुमक्खी का अदर एनिमीज, बी डिजीज, ये सब डिजीजेस का नाम है। बी डिजीज है नोसेमा डिजीज, अमोइबा डिजीज, एक्राइन डिजीज, सेप्टिसिमिया डिजीज, फंगस डिजीज, ब्रूड डिजीज, ये सब डिजीजेस का नाम है। टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे चैप्टर 10 में डिटेल में। हनी एंड बीज वैक्स, केमिकल कंपोजिशन, हनी एज फूड, honey as medicine, honey at religious ceremonies, odd uses, storage suggestions, purity standards, refining process, marketing methods, beeswax uses, rendering process। और चैप्टर 12 में है पॉलिनेशन एजेंट, रिप्रोडक्शन इन वेजिटेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये मधुमक्खी पॉलिनेशन प्रोसेस में आता है, क्रॉस पॉलिनेशन में। पॉलिनेटर, पॉलिनेटर्स क्वालिफिकेशन, कॉमर्शियल क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयलसीड्स, फॉडर्स, आलमंड, एप्पल, स्वीट चेरीज, पीचेस, पियर्स, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, हनी बीज इन ऑर्चार्ड्स, ये सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। और ये सब लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, इंडियन लेबनम इन ब्लूम, हनी बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम इट्स फ्लावर्स, ये सब दिया हुआ डिटेल में, सब इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हनी बी, स्नोड ग्रास है, ये मार्क्स मिलेगा पेज नंबर 18 से। उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, इंटरनल हनी बी क्वीन सेल्स, सब दिया हुआ। हनी एक्सट्रैक्टर एंड एप्लियंसेस के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में दिया हुआ, यूज्ड इन बी कीपिंग। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में है इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग, उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया। द हनी बी एंड द फ्रूट्स ऑफ इट्स toys have been familiar to all from prehistoric times. It is one of the few insects that are directly beneficial to man. No wonder one comes across a lot of folklore praising the honeybee deliciousness and usefulness. These winged creatures find mention in the Vedas and the Ramayana, the book of Proverbs, the Quran, and many other ancient books. इसके बारे में एपीकल्चर और हनी बी के बारे में रामायण किताब में लिखा हुआ, वेदास में लिखा हुआ, कुरान में भी लिखा हुआ है, इस सब के बारे में। हनी बीस बहुत सालों एंशियंट टाइम से ये हनी बीस, हनी, ये एपीकल्चर प्रोसेस हो रहा है। हनी बीस का हनी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, ये सब तो ये होगा। हनी बीस एंड फ्रूट्स हैव बीन प्री हिस्टोरिक टाइम से हनी बी के बारे में सब अवेयर है। एपीकल्चर प्रोसेस कंटिन्यू होते आ रहा है, हनी एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, इसके बारे में दिया हुआ है रामायण की बुक में। फ्यू इंसेक्ट्स, ये एक इंसेक्ट है डायरेक्टली बेनिफिशियल टू मैन, इससे ह्यूमन बीइंग को बहुत बेनिफिट है इसका हनी से। नो वंडर वन कम्स अक्रॉस अ लॉट ऑफ folklore praising the usefulness. Figures and carvings of the honeybee, its combs and hives are found on tombs, coffins, crowns, messes of kings and coins of ancient and modern empires. इसका जो मधुमक्खी का जो फिगर्स है और कार्विंग जो है उसको मिला हुआ टॉम्ब्स में, कॉफिन, ये सब जगह में मिला हुआ, कॉइन्स में, सिक्का में सब मिला हुआ, कार्विंग हनी बी का, मधुमक्खी का फिगर मिला है। एंशियंट टाइम में, इन एंशियंट टाइम्स हनी एंड बी वैक्स वेर एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट्स इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ट्राइब्यूट्स। एंशियंट टाइम में हनी और हनी का प्रोडक्ट जो रहता है, हनी बी का, हनी एंड बी वैक्स एक्सेप्ट किया जाता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता था, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस में हनी को कलेक्ट करता था, ट्राइब्यूट्स में हनी टैक्स लिया जाता था लोगों से। अ जार ऑफ हनी इज अ वेलकम गिफ्ट विच वुड स्वीटन एग्जिस्टिंग रिलेशंस। एक जार वेलकम गिफ्ट की तरह यूज होता था जो मीठा कर देता है एग्जिस्टिंग रिलेशन, एंड इज अ गुड इनॉग्रेशन ऑफ न्यू फ्रेंडशिप के लिए गुड इनॉग्रेशन था। Many religions speak highly of honey and beeswax and enjoy on their followers. The use of these two commodities in various rites performed during festival and on many occasions in the life of an
individual. Honey is also prized as food एंड मेडिसिन। हनी फूड के लिए और मेडिसिन में भी बहुत बेनिफिट है हनी का। मेडिसिन में भी काम आता था। स्वीट भी है, बहुत ज़्यादा फूड में यूज़ होता है। एंड द यूज़ ऑफ बी एक्स आर मेनी एंड वेराइड। बहुत सारे यूजेस है हनी का। हनी बी कॉलोनी एज अ फैसिनेशन ऑफ इट्स ओन एंड naturalists, poets and thinkers alike have reveled in the pleasant art of solving its mysteries. It will not be far wrong to say that the honeybee is one of the most studied creatures and has numerous books written about itself. हनी हनी बी के बारे में बहुत सारा किताब लिखा गया। बहुत स्टडीड क्रिएचर में से एक है हनी। इसको बहुत रिसर्च किया गया, बहुत सारा किताब लिखा गया इसके बारे में। Some writers have admired honeybees for their industry unity. हनी बी को इंडस्ट्री यूनिटी में एडमायर किया गया। सेल्फ सेक्रीफाइस, काल्डनेस ऑफ स्पिरिट, टॉलरेशन, इक्विटेबल डिवीजन ऑफ लेबर इन देयर कॉलोनीज एंड स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस, ये सब के बारे में इसका कम्प्लीमेंट किया गया। और ये एक आर्किटेक्चर भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा हेक्सागोनल कॉन्सेप्ट में बनाता है हाइव्स। ये भी पहले सर्कुलर बना था, बाद में इवॉल्व करके हेक्सागोनल बनाया गया, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हनी भी ये कर पाए, रह पाए वहाँ पे, ज़्यादा हनी कलेक्ट कर पाए, ऐसे कम स्पेस में ज़्यादा स्टोर कर पाए। स्पिरिट है सोशल। अदर्स बिलीव दैट बाय वर्किंग विथ देम वन एक्वायर्स हैप्पीनेस, needed diversion, develops a philosophy of self-sufficiency, self-reliance, self-preservation and learns coordination of thought. कोई बिलीव करता है कि हैप्पीनेस, खुशी मिलता है मधुमक्खी पालने से। नीडेड डाइवर्सन, डेवलप्स फिलोसफी, स्किल्स डेवलप होता है, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ प्रेजेंस, लर्न्स कोऑर्डिनेशन ऑफ थॉट। द इकोनॉमिकली माइंडेड have cultured them for honey and beeswax. Beekeeping has been mastered so well that a colony of bees yielded over 2,100 pounds of honey in South Africa. इतना अच्छा से मास्टर किया गया कि एक कॉलोनी बी पाया गया 2,100 पाउंड का साउथ अफ्रीका में। द ट्रेड ऑफ honeybees to visit and pollinate blossoms has been explored for pollinating large orchard and big acreages, acres of vegetables, clovers, oil seeds and other crops by transferring in wire gauze cages enormous number of bees from one area to another. एक एरिया से दूसरा एरिया में pollen grains ट्रांसफर करता है। हनी पॉलिनेशन प्रोसेस में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वन प्लांट टू अनदर प्लांट में करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड वार में भी काम आया था हनी मधुमक्खी। हनी बीज हैव बीन यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वार थ्रू द एजेस एंड एज रिसेंटली एज इन वर्ल्ड वार वन infiltrated swarms were used to hamper the advance of enemy forces in Belgium. बेल्जियम में मधुमक्खी को यूज किया गया था वर्ल्ड वार वन में, इसको भी। इन दिस कंट्री मेनी a political meeting has ended in pandemonium after a stone has been thrown by a mischievous opponent in a colony of wild bees hanging from a branch of a nearby tree. अगर मधुमक्खी का छत्ता पे, कोई जंगली मधुमक्खी का छत्ता पे पत्थर मार दिया तो पूरा एकदम निकलने लगे, मधुमक्खी काटने लगी। तो इसका भी यूज किया गया था ओपोनेंट कॉलोनी में। द dreaded bee sting, however, has been mysterious quality of healing muscular and nervous pains. जो मधुमक्खी काट देता है उसका नुकसान बहुत सारा, पूरा सुलझा देता है। द मिस्टीरियस क्वालिटी ऑफ हीलिंग मस्कुलर, पूरा रहस्यमय इसका क्वालिटी है। एक्स ऑफ पेन्स, नर्वस पेन्स, एक नहीं हो जाता है, और स्काइसिया, rheumatism and arthritis. Beekeepers generally do not suffer from such ailments. Beekeepers को नुकसान नहीं होता इसमें। Since ancient times, honeybees have been kept in a crude manner in India as in other countries of the world. After the improvement in the method of beekeeping in the West in the second half of the 19th century, with the discovery of the principles of movable frame hive, move one place to another, एक movable frame hive बनाया गया उसको इन 1915 बाय द डेविड एल लैंगस्ट्रोथ। ये आर्टिफिशियल हाइव भी बोला जाता है इसको। हनी एक्सट्रैक्टेड इन 1865 बाय मेजर हुस्क एंड द स्मोकर, धुआं वाला मशीन, धुआं निकलता है उसमें से ताकि मधुमक्खी बता के हनी एक्सट्रैक्ट किया जा सके हाइव से। इन 1870 बाय मोसेस क्विनबाई, efforts were made to introduce
These innovations in this country, such attempts have a long and checkered history, the salient features of which are outlined here. First attempts to keep bee in movable frame hives were made in 1882 in Bengal and in 1883 and in 1884 in the Punjab, but with little success. In 1883, the Government of India published the information on beekeeping collected from the provinces under the title A Collection of Papers on Beekeeping in India. A year later, John Douglas, an employee of the Telegraph Department, Calcutta, published a handbook of beekeeping in India. This book is a record of his own experiences in keeping the Indian honeybee. इसमें रिकॉर्ड किया हुआ इंडियन हनी बी को रखने के मॉडर्न हाइव्स में एपिस इंडिका नाम है उसका साइंटिफिक नेम है इंडियन हनी बी का इन मॉडर्न हाइव्स में लेटर द वर्क वाज टेकन अप बाय द देन imperial entomologist in 1997 at Putsa and it continued up to 1999 तक क्या था सब इन्वेंट किया आर्टिफिशियल जैसे एल लैंगस्ट्रोथ से हुआ न्यूटन भी किया आर्टिफिशियल हाइव उसको स्टोर करने के लिए वन प्लेस टू अनदर ले जाया जा सकता है हाइव्स को अनदर प्लेस ट्रांसफर कर सकते हैं लॉन्ग ये बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है हिस्ट्री में अटेम्प्ट सच हैव लॉन्ग लॉन्ग एंड चेकर्ड हिस्ट्री सैलिएंट फीचर्स ऑफ विच आउटलाइन हियर क्योंकि मूवेबल पहले तो मूवेबल फ्रेम्स बना 1882 बंगाल में 83 1882 बंगाल में 83 80 80 1884 पंजाब में बट विथ लिटिल सक्सेस बहुत कम सफलता के साथ पंजाब में हुआ इन 1880 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश इंफॉर्मेशन 1883 इंडियन गवर्नमेंट एक इंफॉर्मेशन पब्लिश किया बुक जिसका टाइटल एक प्रोविंशियल कलेक्टेड इसका टाइटल था अ कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन बी कीपिंग इंडिया इसमें सब हैंडबुक गाइड बुक जैसा सब डेटा सब रिसर्च पेपर था बी कीपिंग इंडिया के बारे में द हैंडबुक ऑफ जैसे बी कीपिंग इन इंडिया सब प्रमोट किया गया बी कीपिंग को प्रोड्यूस किया पब्लिश किया गया बुक्स को फिर यहाँ पे later the work was taken up by the then imperial entomologist 1907 में इसका वर्क कंटिन्यू किया गया besides publishing a few papers bulletin number 46 entitled beekeeping by C.C. Ghosh was issued ये बुलेटिन नंबर 46 में एक few papers publish किए this provided useful information on the subject at the same time Sir Louis Dane in the Punjab aroused interest in beekeeping and as a result one late F.S. Cousins was employed as apiarist and the Punjab Bee Lieutenant L.T. F.S. Cousins was employed as apiarist and the Punjab Beekeepers Association with its headquarters at Simla was formed. A guide for beekeeping was published in 1960 in South India. The Rev. Newton trained several beekeepers during 1911-1917 and devised a hive named after him. He also made न्यूटन भी बनाया था एक रेव न्यूटन एक आर्टिफिशियल हाइव बनाया था उस हाइव का नाम उसके ऊपर रखा गया विच इज इन कॉमन यूज of common use to the present day for keeping in the plains variety of the Indian bee. Transcourse State took up work in 1917 in Mysore in 1925. The recommendation of the Royal Commission on Agriculture 1928 for developing cottage industry gave a fillip to beekeeping and Madras also took up the work in right earnest in 1931, Punjab in 1933, Gaur in 1834 and UP Uttar Pradesh in 1938. Other provinces and other states followed suit, but no mentionable progress appears to have been made there. Beekeepers of India organized themselves into an All India Beekeepers Association. During the winter of 1938-39, the association publishes the Indian Bee Journal and organizes annual conferences and exhibitions at various centers in the country. There are state and district beekeepers association affiliated to it. The Indian Council of Agriculture Research coordinates the ac- activities of workers doing research in beekeeping. The council established a central beekeeping research station in the Punjab in 1945 and 6 years later
at Coimbatore in Madras. Beekeeping is an ideal hobby for it entails outdoor work, does not require much time, is not costly, and the job is both interesting and instructive. Moreover, the returns in the form of money and mental satisfaction are gratifying. As a cottage industry, it is truly a second string to any one bow. It helps in increasing the yield of crops through pollination. इससे pollination में improve होता है. In short, beekeeping is a paying pastime. Commercially, it has been an outstanding success in the USA, Canada, Australia, and the New Zealand. But in India, attempts so far made at commercial beekeeping have been few and far between, and therefore no opinion can be expressed on its feasibility in this country. It may be said, however, that with greater experience gained by individual beekeepers, their activities will increase gradually until beekeeping becomes their main occupation. In the context of our 5-year plans and community development projects, honeybee are certainly an asset. They help in increasing crop yields through pollination and greater and gather nectar. Pollination में भी बहुत हेल्प करता है honeybees. ये क्रॉप improve करता है increasing crop yields. The honeybees have established an inviolable record in some countries of the West. कुछ वेस्ट कंट्री में भी एक रिकॉर्ड बनाया है, स्टैब्लिश किया. फॉर एग्जांपल इन 1949, जैसे एग्जांपल में 1949 में द यूएसए प्रोड्यूस 2 lakh 23 lakh pound of honey and 60 lakh pound of beeswax worth over 15 crore fro- from about 54 lakh 66,000 colonies of bees owned by 5 lakh beekeepers. In 1948, Canada produced 4 crore 50 lakh pound of honey, and 6 lakh 66,000 45 lakh of honey. Canada produced 45 lakh of honey, 45 lakh pound of honey, and 6 6 6 lakh 66,000 pound of beeswax worth over 7 crores from 5 lakh 70,000 colonies owned by 32,000 beekeepers. In India, it is estimated that 64 lakh pound of honey and about 1 lakh 10,000 pound of beeswax are produced annually from the three species of bees. Its total value in rupees is in rupees 35 lakh. Surely there is much leeway to be made. The economics of small-scale beekeeping has been worked out in Madras and the Punjab. Ramachandran states in Beekeeping in India, South India, that accurate records were kept for 11 colonies of Apis indica plains variety bees during 1932-33. 11 swarms valued at rupees 77 were raised from these colonies. Honey extracted from 11 colonies was 117 pounds, valued at rupees 146, 149, at rupees 1.25 per pound. Thus, a gross income of rupees 223.44 paisa from 11 coins was worked out. On the expenditure side, the out-of-pocket expenses were rupees 88 for 22 hives at rupees 4 each, rupees 10 for the honey extracted, and an estimated 22 at the cost of collecting the swarms. A total outlay of rupees 120 rupees. Thus, the beekeeper saved more than 100 net rupees 100 net. In 1942, Gobind Ram, a beekeeper of Kangra in the Punjab, gave detailed accounts of his beekeeping venture in the Indian Bee Journal. He began with one colony in 1937, which grew to four in 1938.
6 in 1940 and 11 in 1941. His original investment on equipment and the like was not even rupees 50, but materials had labor purchased bees. Sugar comb foundation for bees cost 142. The excess expenditure having been made from the sale of honey. He extracted 290 pounds of honey in 4 years, from 1938 to 1941, and sold honey at 75 a pound through the government apiary, including some miscellaneous receipts. His total income come to rupees 189 or 19%. The estimated value of the asset at the end of 1941, raw material at cost and applications and bees at market value was rupees 151. His total income worked out at rupees 341, and the and left a net saving over five over the years working of rupees 198.50 paisa. On a cash investment of 50 rupees, his net profit was about 200 rupees. That is four times the investment, as his investment had increased to rupees 151 rupees 81 paisa, three times the original. Some preliminary investigations on the economics of migratory beekeeping uh, carried out and carried out at the Central Beekeeping Research Station in the Punjab showed that colonies taken from Katrine to Nagrota, both in Kangra district, gave a net income of rupees 18 rupees 88 paisa per colony compared to 5 rupees 94 paisa per colony from colonies kept throughout the year at Katrine. Chapter 2 will start next chapter, next class. The honeybee. Thank you.